Hello everyone, so in this video we will see the topic of cabinet committees. So the very first thing which you should keep in your mind when you are studying cabinet committees, they should not be confused with the parliamentary committees. The parliamentary committees and the cabinet committees are totally different. They have no relation with each other. Okay, so they are completely opposite topics. Okay, so what is cabinet committee? First, just think what is a committee. कमेटी किसको बोलते हैं? अगर आसान भाषा में समझें तो एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल, मान लो 5 ग्रुप ऑफ पीपल, दे केम टुगेदर, एक बॉडी की फॉर्मेशन होती है, हु वर्क्स टू अटेन सम रिजल्ट, उसको हम कमेटी कहते हैं. ठीक है, तो ये जो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स है, बट दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स, दे आर बेसिकली एक्सपर्ट्स. तो वैसे ही जैसे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को ईजिली एग्जीक्यूट किया जा सके, तो उस बेसिस पे जो है स्मॉल बॉडी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स केम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ कमेटी हुज बेसिक वर्क इज टू हेल्प द कैबिनेट इन डिसीजन मेकिंग. सो कैबिनेट कमेटी का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी? कैबिनेट कमेटी फंक्शन इज टू हेल्प द कैबिनेट इन डिसीजन मेकिंग. ये मुख्य काम है उनका. ओके, सो व्हाट इज द सोर्स फॉर दिस? व्हाट इज द सोर्स फॉर कैबिनेट कमेटी? सोर्स क्या है? द सोर्स इज द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961. दैट इज ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन of business rules 1961. Okay, so यहाँ पर what is the meaning of this business and rules? Transaction of business, किसके business के transaction की बात हो रही है? So it is the business of the union executive. It is the business of union executive. And what is transaction of business? That is the effective implementation of policies and laws. It talks about the implementation of policies and laws and allocating and distributing the work to different departments within Government of India. Allocating and distributing work to different departments within the Government of India. तो सोर्स क्या था हमने देखा? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961. बिजनेस, किसके बिजनेस की बात हो रही है? द बिजनेस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. एंड व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस? इट इज बेसिकली द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड लॉज. ओके, एंड एलोकेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क टू डिफरेंट डिपार्टमेंट विद इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो हु फ्रेम दिस रूल्स? कौन फ्रेम करता है इन रूल्स को? हमने सोर्स देखा ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961. तो ये काम किसका है कि हु फ्रेम दीज रूल्स? दे आर फ्रेम्ड बाय प्रेसिडेंट. दे आर फ्रेम्ड बाय प्रेसिडेंट. एंड हु इम्प्लीमेंट दीज रूल्स? दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी. कैबिनेट सेक्रेटरी. हु इज दिस कैबिनेट सेक्रेटरी? ही इज द टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट. टॉप मोस्ट bureaucrat. It is the highest rank an IAS officer can attain. So he on a daily basis, or he sits with the cabinet ministers, he talks to them. Okay, his job is to ensure that all the executive department carry out effective implementation. Okay, so if someone is selected at the age of 21 or 22, then he reaches till the rank of the cabinet secretary. It is the highest rank. He is the top bureaucrat. Okay, so जैसे हमने देखा, source is this transaction of business and allocation of business rules 1961. And who frame these rules? They are framed by president. Under which article? Under article 77. What does article 77 talks about? It says that president shall frame rules for allocation of business and transaction of business.
Okay, so as we know, all the executive actions should be carried out in the name of president, as he is the executive head. Okay, I repeat, article 77 says the president shall frame rules for allocation of business and transaction of business. Okay, so under article 77, as we have seen, that president shall frame the rules for allocation and transaction of business, and all the executive actions should be carried out in the name of the president only, as he is the executive head. So we have seen the source. Now we will see the function. So what is the function of cabinet committee? The utmost function of the cabinet committee is to advise cabinet in executive decision making. This is the most fundamental and important function of the cabinet committee. Now, facts about cabinet committee. There are two types of cabinet committee. Number one is standing. Number two, ad hoc. What does standing means? It means permanent. And what does ad hoc means? That is temporary cabinet committee. Okay. So who will decide on the number of cabinet committees? कौन ये डिसाइड करेगा कितनी कैबिनेट कमिटीज होगी, उनकी कंपोजिशन क्या क्या होगी, नॉमेनक्लेचर क्या होगा कैबिनेट कमेटी का, स्ट्रेंथ हर एक कैबिनेट कमेटी कितनी होनी चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? इट विल बी डिसाइड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट? ही विल डिसाइड, PM decides number of cabinet committees. He decides about the composition of cabinet committees. He also decide about the nomenclature, that is the naming. नाम क्या होगा कैबिनेट कमेटी का, ये भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करेंगे. स्ट्रेंथ क्या होगी, ये भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करेंगे. ओके, सो एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पर. PM is a member of CC. If PM is a member, अगर PM is a member of CC, then he automatically chairs it. Okay, then he will be the chairman of the cabinet committee. अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर है किसी भी कैबिनेट कमेटी के, then he will chair that cabinet committee. Keep this thing in mind. Okay, so PM decides on the number of cabinet committee. Presently there are 8 cabinet committees, and he also decides the composition of cabinet committee. So who can be a member of cabinet committee will be decided by the prime minister only. So who can be the member of cabinet committee? Cabinet minister plus minister of state, if invited, can be the member of cabinet committee. ठीक है. So what are the present 8 cabinet committees? मैं आपको नाम बता देता हूँ. 8 CCs are: number 1, appointment; number 2, accommodation; number 3, economic affairs; number 4, parliamentary affairs; number 5, political affairs; number 6, security; number 7, investment and growth; and number 8 is employment and skill development. These 2 are formed in 2019. Okay, so these are the 8 cabinet committees. Cabinet committees of appointment. What is the function of the cabinet committee of appointment?
they will decide all the important positions just after the joint secretary rank. तो जितने भी बड़े अधिकारी है, जैसे कि आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है, एंड एयरफोर्स चीफ है, DGs ऑफ वेरियस एजेंसीज लाइक CBI एंड CISF, इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट. ओके. सो CC ऑन अकोमोडेशन, दे विल सी कि दिल्ली में कौन सा बंगला खाली है, कौन सा किस ऑफिसर्स को मिलेगा, ये सब फंक्शन का है. दे गाइड ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द कंट्री, they look after the legislatures, and they see the political affairs. And then cabinet committee on security looks after all the security related things. जैसे कि पुलवामा हुआ था उस टाइम पे, there were continuous meetings of cabinet committee on security and investment and growth. ये दोनों जो है अभी लेटेस्ट 2019 में फॉर्म की गई है. So PM is not a member of cabinet committee on accommodation and cabinet committee on parliamentary affairs. Cabinet committee of he's not a member of cabinet committee on accommodation and on parliamentary affairs. इन दोनों के member prime minister नहीं है. So these are the 8 cabinet committees. Okay, that's all I think for the cabinet committees. Thank you so much.